Good afternoon, friends. Welcome to this joint briefing. Thank you for coming at such short notice. As you can see, I have with me the Director General of Military Operations, Lieutenant General Ranbir Singh. He will read out a statement to you in English as well as in Hindi. I would now hand over the mic to DGMO. Ladies and gentlemen, Jai Hind, and a very good morning to all of you. It has been a matter of serious concern that there has been continuing and increasing infiltration by terrorists across the line of control in Jammu and Kashmir. This is reflected in the terrorist attacks at Poonch and Uri on 11th and 18th of September, respectively. Almost 20 infiltration attempts have been foiled by the Indian Army successfully during this year. During these terrorist attacks and infiltration attempts, we have recovered items including global positioning systems and stores which have had Pakistani markings. Further, captured terrorists hailing from Pakistan or Pakistan-occupied Kashmir have confessed to their training and arming in Pakistan or territory under the control of Pakistan. The matter has been taken up at the highest diplomatic levels and the military levels at regular times. India has actually also offered consular access to the apprehended terrorists to Pakistan to verify their confessions. Furthermore, we had proposed that fingerprints and DNA samples of terrorists who had been killed in the Uri and Poonch encounters can also be made available to Pakistan for their investigations. Despite our persistent urging that Pakistan respect its commitment made in January 2004 not to allow its soil or territory under its control to be used for terrorism against India, there has been no let-up in infiltration or terrorist actions inside our territory. If the damage was limited, it has been primarily due to the efforts of the soldiers of Indian Army who are deployed in a multi-tier counter-infiltration grid, and most of the infiltration bids have been foiled at those locations. The Indian armed forces have been extremely vigilant in the face of continuing threat. Now, based on very specific and credible information which we received yesterday, that some terrorist teams had positioned themselves at launch pads along the line of control with an aim to carry out infiltration and terrorist strikes in Jammu and Kashmir and various other metros in our country. The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. The operations were basically focused to ensure that these terrorists do not succeed in their design of infiltration and carrying out destruction and endangering the lives of citizens of our country. During these counter-terrorist operations, significant casualties have been caused to the terrorists and those who are trying to support them. The operations aimed at neutralizing the terrorists have since ceased. We do not have any plans for further continuation of the operations. However, the Indian armed forces are fully prepared for any contingency that may arise. I have just spoken to the Pakistani Director General of Military Operations and explained our concerns, and also shared with him the operations we had conducted last night. It is India's intention to maintain peace and tranquility in the region, but we can certainly not allow the terrorists to operate across the line of control with impunity and attack the citizens of our country.
In line with Pakistan's commitment made in January 2004 not to allow its soil or territory under its control for any terrorist activities against India, we expect the Pakistan Army to cooperate with us with a view to erase this menace of terrorism from our region. Thank you very much. देवियों और सज्जनों, जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारे लिए एक बहुत ही गंभीर विषय है कि पिछले कुछ समय में जम्मू एंड कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार से घुसपैठ की बढ़ोतरी हुई है। 11 और 18 सितंबर 2016 को पुंछ और उरी के अंदर हुए आतंकवादी हमले इसकी एक मिसाल हैं। ऐसी घुसपैठ की तकरीबन आतंकवादियों द्वारा 20 कोशिशें भारतीय सेना द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल या उसके नज़दीक उनको नकारा किया गया है। इन घुसपैठ के प्रयासों और आतंकवादी हमलों के दौरान मिला सामान और सामग्री, जिसमें शामिल है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये साफ जाहिर करते हैं कि उनके अंदर पाकिस्तानी चिन्ह हैं। हमने कुछ आतंकवादियों को गिरफ्त में भी लिया है जो कि पाकिस्तान या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से संबंध रखते हैं, उधर के मूल निवासी हैं। पूछताछ के दौरान उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उनको पाकिस्तान में प्रशिक्षण और हथियार दिए गए थे। इस मुद्दे को हमने राजनीतिक स्तर पर और मिलिट्री स्तर के ऊपर हमेशा पाकिस्तान के साथ समय समय के ऊपर अपना कंसर्न एक्सप्रेस करते रहे हैं। हमने पाकिस्तान को इन आतंकवादियों को काउंसलर एक्सेस देने का भी न्योता दिया है और साथ ही में हमने ये भी उनको बताया है कि जो आतंकवादी पुंछ और उरी के अंदर मारे गए उनके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल भी पाकिस्तान को दिए जा सकते हैं ताकि वो इसकी आगे की छानबीन कर सकें। हमारी सारी कोशिशों के बावजूद कि पाकिस्तान अपनी ज़मीन को भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों के लिए ना इस्तेमाल करे, जैसा कि उसने अपना जनवरी 2004 में आश्वासन दिया था हमें कि अपनी मिट्टी को वो भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और घुसपैठ और आतंकवादियों की घटनाएं बढ़ोतरी पे रही हैं। अगर हम अपना नुकसान कम करने में सफल रहे हैं तो इसका श्रेय उन सैनिकों को जाता है, भारतीय सेना के सैनिक जो कि एक बहुत ही कारगर मल्टी टियर्ड काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के ऊपर तैनात हैं, जिन्होंने कि इन घुसपैठियों को रोककर उनके आतंकवादी डिज़ाइन को सफल न होने देने की क्षमता रखी है। कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है, जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। हमारा इन ऑपरेशंस को और समय तक जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय
आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र दल किसी भी कॉन्टिंजेंसी के लिए हर समय तैयार हैं। मैंने अभी पाकिस्तान डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ संपर्क किया और उनको अपने कंसर्न्स बताए और उनको कल रात के ऑपरेशंस के बारे में भी जानकारी दी। हम किसी भी सूरत में आतंकवादियों को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बेझिझक हरकत नहीं करने दे सकते और ये हम बिल्कुल गवारा नहीं करेंगे कि आतंकवादी हमारे देश के नागरिकों पर किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकें। पाकिस्तान ने जनवरी 2004 में जो आश्वासन दिया था कि वे अपनी ज़मीन से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले नहीं होने देंगे और इसी वचन के अनुसार मैं पाकिस्तान सेना से उम्मीद करता हूं कि वो हमारा समर्थन करें और हम मिलकर इस आतंकवाद को जड़ से मिटा सकें और अपने इलाके के अंदर शांति बहाल कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। We will not be taking any questions at the moment, but during the course of the day, we will be providing more information to you as more information becomes available to us.